So today we have 4 friends, 2 boys, 2 girls, best friends who started a business and mashallah has sustained it for a very, very long time. Yeah. Yes? So that is what we want to discuss today. Your friendship, how you guys became friends, how did you guys think of doing business and a relationship between boys, girls, girls. We want to discuss that dynamic also. So that's why we're here. तो हम शुरू करेंगे कि एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कब से दोस्ती है. पहले आप लोग लेडीज फर्स्ट. अच्छा, मराम और मेरी दोस्ती को अब कितने साल हो गए? अराउंड 29 years. और हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले थे किनेट कॉलेज में. ओके. So we were 16 and मैं प्री मेड में थी, ये जनरल साइंसेस में थी. और a friend of mine in my batch basically said, you'd like to hang out with this group of girls that I know because we're the cool girls. Yeah. Oh, He said, वो जरा cool है. That's it. I don't know. I guess she thought I was miserable in pre-med. So जरा, I think maybe she must have been the first one who identified me to be a misfit in pre-med. उसने मुझे कहा तुम उनके साथ hang out करो. So I met her through her. क्या आप दोनों की भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है? नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. हमने अपने सब्जेक्ट्स नहीं चेंज किए थे, लेकिन वो ऐसे ही था. I met him for the first time in 1999. मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया था. हाँ, इसने किया, लेकिन मैंने नहीं करवाया था. But what happened was that हम NCA के एग्जाम में मिले थे और इसने भी आर्किटेक्चर में ही अप्लाई किया था. ओके. अच्छा. हुआ, लेकिन इसने आर्ट्स में भी किया था और 2-3 और में भी किया था, तो आर्किटेक्चर में नहीं हुआ था, लेकिन NCA में हो गया था. Clearly met in 2000. 2000. Yeah. 23 years. So it was nobody recommended us as friends, but at a workshop we met. And बस वही वर्कशॉप और फिर टाइम और फिर ट्रैवल और फिर दोस्ती और फिर I think initially दोस्तियां और फिर ब्रेकअप्स और काफी चीजें गुजर के दोस्ती स्ट्रांग होती गई. Initially हम लोग का यही था कि हम लोग सारे थिएटर से स्टार्ट हुए थे और वहीं हम लोग की सारों की दोस्तियां हुई थी. And I think we've done makeup for one of your shows. 2001 or Most of our Yeah, I'm friends sure. and we made friends through that. NCA में दिया था. Yeah. And then उसके बाद बस सब चल रहा था. We were all wearing Yeah, black I remember कपड़े. वो Curly मैंने hair, boarding दिया था. son. चाची का था. वो फैशन शो का किया. या ओए ओके. Shit. That was 2001. चाची बोल रही हूँ. No, कोई नहीं. क्यों भी. So yeah. चाहेंगे तो हम कट कर देंगे अगर चाची निकालना है तो. But then why you thought of working together? And before you tell that how it happened, first we would like you two as well and you two to tell about your business. I think working together तो बहुत आगे की बात थी. अभी तो पहले जब आपकी दोस्ती होती है, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हो, then I think आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो. So I think, but I believe कि मैं, इरफान, there's another friend of ours, Abes, हम लोगों ने I think कोई तीसरे ऑलरेडी हम लोग अपनी थिएटर वाली एक छोटी सी कंपनी चला रहे थे, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि किस तरह ये चीजें होती हैं. तो आई थिंक हमने 3rd ईयर में ही आर्किटेक्चर के बारे में सोचना शुरू कर दिया. लेट्स स्टार्ट अ कंपनी, लेट्स डू सम आर्किटेक्चर वर्क. तो सोच वहां से आ गई थी. So Saad and I run a company called Architects Inc. We've been in practice since past 18-19 years now. You guys started right after NCA. NCA. Right after, right? अच्छा. I mean, हमने जॉब की थी अलग-अलग आर्किटेक्ट्स के पास. अक्टूबर 2005 में Architects Inc. हमने स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंटली. लेकिन our journey was not about making money. It was working together, and it had nothing to do with architecture. Okay. It started off as theaters. It started off के यार हमने छुट्टी पे जाना है, हमें पैसे कमाने हैं, हम क्या करते हैं, चलो मॉडलिंग करते हैं, जो भी कमाएंगे 50-50 करेंगे. माइम करते हैं, जो भी कमाएंगे 50-50 करेंगे. It was a thing that जो मैं करूंगा 50-50 होगा, ये करेगा 50-50 होगा, चाहे मैं उसका पार्ट हूं ना हूं. Are you So serious? it was, that's how it started off. Like कोई भी काम करेंगे 50-50 करेंगे. और मैं इसके हॉस्टल के कमरे में सोच के यार जब पैसे आएंगे ना फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर आएंगे ना तो हम ये करेंगे.
तो फिर हमने डिसाइड किया कि उसको हम एक कंपनी एक्सपेंस बनाते हैं कि जब भी हमारे पैसे आया करेंगे तो हम दोनों जाके एक ही टी शर्ट लेते थे, एक ही शर्ट लेते थे, एक ही जीन्स लेते थे, कहते थे ये हमारा कंपनी एक्सपेंस है, ये हमने दोनों ने अपने पे इन्वेस्ट किए. So it was that's how it started off. The business part was not there, the company was not there, it was just making money together. That was the whole idea. I think it's just an understanding कि हमने ये करना है और ये pattern है and this is what we have to follow. That's the way we can make money. So let's do this so that we can travel. Exactly. और equally Yeah. आप चीजें divide. Yeah. That's an interesting That- model कि मतलब that's part so- है नहीं है लेकिन पैसे divide होंगे. Organized, this was exactly how we operated. And still do. That वो करना है, ये करना है, okay, let's do Split this. it even. Split it even. Once we became friends, इसका interest makeup में था, and I don't know, I developed क्या कहते हैं, an interest in photography, and we started taking part in competitions, in photography competitions, और फिर इस तरह like it was very trendy back then कि आप अपने shoots करवाते थे, रिश्ते के लिए अपने shoots What year is this? 94, 95 to 98 that we were in. So एक अदद एल्बम होती थी हर दिन किसी नई लड़की की जो सर्कुलेट होती थी कैंटीन में, and there would be these glamorous photographs. This is you know? the name. This is good. Okay. So we thought, hey, you know how to do makeup. Yeah. We can do some photography. Let's earn some money on the side. I mean, lots of people have asked us, okay, how पैसा बीच में आ जाता है दोस्ती के, like आते ही नहीं है, because अगर हम नहीं कमाते हम दोनों नहीं कमाते, और अगर कमा रहे हैं तो it's a split. So And I still remember we opened our first bank account and everything was like कि जो करना उसमें जाके सबसे पहले पैसा डाल दो, and then Before whatever spending you it. have to do, just take it out. यानी कि it was being spent on both of us. Yeah. But that is very interesting because I have not heard that. When now people do business, I don't see people doing it in this way. It's very commercial and exactly, ये कोई normal money matter I oriented. don't think this is the professional way to do it. This works with us. That's where the bond of friendship comes in. Yeah. Wait, that is stronger, na? Exactly. And the way he's saying, like they wanted to travel or buy things together, I think the intent was the same always. Yeah. अब कहाँ जाना है? Let's Because do we- this. Have that, Yeah. I plan ahead and just do it. But don't you think कि आजकल की दोस्तियाँ ऐसी नहीं है? नहीं यार, ऐसा हर जगह ऐसी नहीं हो दोस्ती सकता है भाई, यार, ये बहुत I mean, ये मेरी जनरेशन अच्छी थी, तुम्हारी जनरेशन नहीं मतलब देखिए, हम कोई ऐसी जनरेशन से नहीं है कि सिर्फ उसी जनरेशन में ये दो निकला है. पूरी दुनिया में बहुत लोग हो गए जिन्होंने इकट्ठे काम किया या नहीं किया या कर रहे हैं, और बहुत हमारे पेरेंट्स के भी टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अभी तक दोस्त हैं. तो आई एम श्योर इनके भी हो जाएंगे, इतना कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो. कोई आई मीन डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं थोड़े से अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, बट माइंडसेट नहीं, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट इवेंचुअली. उसका डायनामिक्स से ताल्लुक नहीं है. टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई ना. पहले वक्तों में हम लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते थे. या अब जरा ये हो गया कि अब एवरीथिंग इज लाइक आप मैसेज करो, आप सामने You can be solo. I mean, एक तरह से more confidently. Whereas previously, we like collaborating. Yeah. We like, hey, what do you think? Why don't we do this together? Yeah. Now that thing about like I can learn this from YouTube. I can do this. I can do this. And people, like he said, people don't like sharing. कि अपने पास कोई knowledge भी आ गया तो they feel insecure about it. But honestly, I might feel that with somebody else, but I'm okay sharing with her. Yeah. So if अगर आप में ही है ना वो एक just this need or just want, I want to build my my whole career or whatever, my life with somebody. I like to share it, rather than be solo. But there are plenty of people who like traveling alone, working alone, and that's perfectly That's fine. perfectly fine. we are fine with I think वो जो मेरीन की बात है ना, the difference between the friendships now and then, probably we are not able to relate to it because we comes from that time. तो आज की दोस्ती में भी उतनी ही strong हो, but probably हमें समझ नहीं आती, उनकी connectivity different है, हमारी connectivity different है, तो इसलिए शायद we are not able to accept that. Understand, क्योंकि हमारी connectivity बहुत interpersonal बात करके हमारी बहुत ज्यादा फेस टू फेस थी. face to face जो है वो बहुत डिजिटल हो गई है. वीडियो कॉल कर लो आप, अब वो चीजें बहुत एनिमेटेड हो गई. And also स्टिल दे आर अब कनेक्टेड. चैट पे ज्यादा है. फोन करना है तो पहले पूछना है कि कैन आई कॉल यू. भाई हम तो फोन उठा के फोन कर लेते होते थे. फिर वही वाली बात है, जनरेशन चेंज हो गई है. पहले आपके पास सिर्फ थी लैंडलाइन,
आदियों के आपके नंबर होते हैं, हर कोई लैंडलाइन के पास नहीं बैठा, के फोन आएगा अंकल ये डिसाइड हो कि रात को, और आपको इजाजत भी मिलती थी एक कॉल की। आप क्योंकि आप इतने इंस्टेंटली कनेक्टेड हो दैट यू नीड टू गिव देम स्पेस एज वेल, दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क देम आर यू फ्री टू take a call. We did take permission from whoever would pick up the phone. Baat ho sakta. Yeah, but I think this is part of new culture actually. Yeah. But don't you also think that, for instance, while I was, becoming close friends with Maram, bahut dafa, even family, even in that time, people did discourage me. Okay, are you sure? दोस्तियां छूट जाती हैं, दोस्तियां तो छूट जाएंगी, शादी होगी तो बिल्कुल ही छूट जाएगी, लड़कियां तो अलग चली जाती हैं, ये होता है, मियाँ आ जाते हैं, are you sure you want to invest your time in a long term, especially work, with somebody who's, your future, we don't see it happening because it is hard. Yeah. And you guys know it, I know it, it does take sacrifice. Yes. I mean, and we started it ourselves. इन्होंने जैसे सैक्रिफाइस किया सब्जेक्ट्स, लिटरली वी डिड द सेम। आई मीन मास्टर्स में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था MBA प्रोग्राम में, इसका हुआ था, एंड शी लेट गो ऑफ दैट एंड शी डिड हर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट सो दैट वी कुड कैरी ऑन बीइंग टुगेदर, शेयरिंग द सेम स्केड्यूल, सो दैट वी कुड हैव आवर फ्रेंड्स। निस्बत रोड करते थे हम अपने सेट बना ले, जो करना है, हमारी रूटीन ना चेंज हो। सो आई मीन दोस वी फेल्ट दैट कि वाकई इट्स नॉट जो माँ बाप कह रहे हैं कि आर यू श्योर, इट विल चैलेंज यू, एंड इट डज। तो माँ बाप या सोसाइटी, वैसे ही आपका कल्चर भी वो कह रहा होता है कि देख लो। दैट्स व्हाई आई थिंक perhaps people do have friendships और वो छुट्टी जाती हैं। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था when you officially started the company? हमें सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आर्किटेक्चर का मिला था वो एक स्नूकर क्लब मिला था, और वो भी हम जाते थे वहां पे रोज खेलने के लिए। मैंने कहा यार मैं क्या किया है, कोई अच्छा सा डिजाइन ही करा ले। मैंने कहा जी बड़ा महंगा होता है। मैंने कहा जी हम आर्किटेक्ट हम कर देंगे। तो मैंने कहा अच्छा बेटा आप तो कॉलेज में हो ना, आपको क्या पता है बड़ा मुश्किल काम होता है। जी आप ट्राई करके देख लें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपके पास इतना बजट है। अब उस वक्त हमें आइडिया नहीं होता था कि कितने बजट में क्या होना है। मैंने कहा जी आप दे दीजिए पैसे, मैं कर दूंगा। उन्होंने पैसे दिए, हमने साल में ये क्या करेंगे, किस तरह होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमने कर क्या दिया। पूरी दीवार पेंट की। कितने पैसे? It was 1 lakh rupees. This was 2004. एक पूरा स्नूकर क्लब बनाना था, उसके अंदर लाइट, पंखे, इलेक्ट्रिक, 1 लाख रुपए में उसने कहा था कि 1 लाख रुपए दूंगा, मैं 25,000 में काम के बाद देने से 75,000 रुपीज पहले दे रहा था। रोज का खाना और रोज का एक मील हमें मिलता था, क्योंकि वो उसका रेस्टोरेंट साथ है। उन्होंने कहा था कि रोज का एक खाना मिलेगा। तो 25,000 में से पहले हमने डिसाइड किया कि हमने रोज ट्रैवल करके जाना है, आना है, वो रिक्शे का किराया अलग। फिर दोस्तों को साथ मिलाया कि यार तू ये वाली दीवार पेंट कर दे। मुराद है, उससे हमने एक दीवार पेंट कराई, फिर कुछ और कराई। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, वो फ्लॉप हो गया, लेकिन वो उस दिन चल गया। हमने यूवी लाइट में जो ब्लैक लाइट होती थी, आर ट्रिक वाज कि हम ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर करेंगे, जब लाइट ऑन होगी ना तो सारी दीवारें व्हाइट ग्लो करेगा। वी डिडंट रियलाइज कि वो यूवी पेंट करो तो होता है, पेंट तो कर दिया तो वो वॉलपेपर ही बंद होगा। वो जिस दिन आया बंदे ने लाइट ऑन की है, वो कह रहा है अच्छा अब मैंने कहा जी अभी देखिए। अच्छा बेस्ट है कि इरफान वहां गया, उसको टिश्यू नजर आया, टिश्यू तो इरफान गया, स्विच डाउन में 2 मिनट दे। उसको वापस भेजा एग्जाम में, कहना यार ये क्या होगा। अच्छा हमारे दांत और आंखें ग्लो कर रही हैं, ये क्या होगा। लाइक जस्ट सॉ वो टिश्यू का डब्बा पड़ा हुआ था, वो ग्लो कर रहा था। मैंने कहा टिश्यू ग्लो कर रहा है। कहता फिर देखा डब्बे फाड़ो, उसके सारे फाड़ के हमने फ्लोर पे डाले, क्योंकि फर्नीचर नहीं आया था। फ्लोर पे फेंक के आया, बुलाया, उनको दिखाया, ने कहा ये देखिए। कहता यार ये क्या कर दिया आपने, सब कुछ हो गया है। कर जी बस देखिए। कहता यार अमेजिंग, यार मैं आपको एक और प्रोजेक्ट देता हूँ। फिर हमने फर्नीचर के ऊपर वो सारा फैब्रिक वगैरह व्यू वाला जब पहुंचा, इट मेड सेंस एट दैट टाइम, बट वो उस वक्त एज अ टीम वर्क इट वर्कड आउट। वी डिडंट सेव एनी मनी, but that was our first project. That's why we decided कि अब हम आर्किटेक्चर भी इकट्ठे करेंगे। At that time we were in college. We were in college. Yeah. We were in the 3rd year. What was your combined first project when you officially started Maram and Aabroo? Yeah, officially though I think the day you start take a project for money, that makes it official. And What was your first at college? She probably did somebody's engagement or bridal makeup, took money for it, so that makes it official, right? But first
professionally, I would say हम लोग 2001 में we were in Abu Dhabi and we did shoots there. Acha. Yeah, Oh, nice. Pengu, Pakistan. So, and you know, there were like a line of models who came to us और हम दोनों बैठे हमने कहा Abro हमने models choose कर लिया and yeah, 21-year-olds were like हाँ तुम अच्छी नहीं हो तुम अच्छी हो ठीक है and we chose a model and we had to shoot. That was incredible. Nobody cared कि आपने mood board क्यों नहीं लेके आए, which is what we experienced before going to Abu Dhabi. Okay, we went to Hajra Haya and we went to Maria B at that time and she said portfolio लेके आओ. हमने कहा यार खिंचवाएंगे तो बनेगा ना. फिर Abu Dhabi से जब हम after like 4 years when we came back then there was a buzz and everybody said कोई 2 लड़कियां दुबई. You were there for 4 years? Yeah. Oh, Yeah. I didn't know that. Okay. So when we met after graduating, Yeah. that's when you guys came. So Yes. our studio basically launched in October 2005, and I think that's about the time we started. We met through with Oh, so that's the same time we started our company, Yeah. 5th October 2005. 2005. कोई ऐसा project जो which is like close to heart. A lot of projects are close to the heart, but थोड़ी time के बाद एक नया project आ जाता है, then you focus on that. So, I mean, as such, like, if you say when we did our first IMAX cinema, which was the first Pakistani cinema associated to it, coordinating with the international architects and all that, that was good experience के जी हम represent कर रहे हैं. Then we opened the first restaurant in Dubai. It was a good experience के जी पाकिस्तान से हम बाहर जाके दुबई में काम कर रहे हैं. We did a set for Pakistan Day in Nagoya, Japan. It was a good experience. So those are good memories. Close to the heart सारे project हैं दिल से किए हैं. कोई ऐसा नहीं है जो सर से उतारा है मगरो लाया है. तो I mean क्या झूठ बोल रहे हो. हमारा कोई प्रोजेक्ट था? I think थोड़े से mommy brained है हम. So सबसे recent would be I think MaulaJatt. And that is big. That is a dream project. It was, you know, Very well done. Do you know I still haven't seen the movie? I have seen the movie. I don't know what इंटरव्यू आने से पहले आप देख लेना. कैमरा बंद होगा तो इंटरव्यू लगने से पहले देख लेना. I'm planning on watching it. अभी लगी हुई है, लाहौर में लगी हुई है, so I'll go watch it soon. Keep forgot, man. It was so many decades ago that it was done. So, I mean, that was, I think, wild. That's a description for it. That was amazing and crazy and traumatic experience. Yeah, I think With stress. I still have PTSD. Every time somebody calls एक project है मैं phone बंद आप मैं नहीं कर सकती. I don't think I can stay out for too long. I don't want to stay in the cold. मुझे MaulaJatt पे जो ठंड लगती थी ना, I still can't get over it. हालांकि कांपते थे हम, बस कांप रहे वेट कर रहे बस. हाँ Memorable. तो है तो memorable ही. You guys have recently, for some reason, diversified into restaurant business. For some reason. Isn't it amazing? Congratulations. So वो किसका पैशन प्रोजेक्ट था और वो भी इकट्ठे किया, वो भी था कि वैसे किसका आइडिया था? I think Ifran was always, उसको हमेशा से शौक था. He's a foodie as well. Caviar. Yeah, It's called Caviar Club. Called Caviar Club, but Ifran को हमेशा, he's a foodie person as we all know. So I think उसको हमेशा से this was always his interest कि यार हम लोग एक टाइम पे करेंगे. Obviously के साथ रह रहे कि अब मैं भी थोड़ा सा foodie हो गया. So मैंने कहा कि चलो let's see, and then जब opportunity आएगी तो we'll jump into it. So I think इसको वो opportunity नजर आई, and बस उसने मुझे आके बताया. But the good part is we've partnered up with two best friends. Two best friends. Yeah, And they are they two are best two friends. best Also friends, working we are two together best friends. for many years. So अब हम 4 partners हैं. So in in that Caviar, 2 and 2. So let's see how it's me. best friendship but Allah करे इंशाल्लाह अच्छा चले. Ifran and Taimur So- and Kashif. We're four partners. Opportunities बहुत मिलती थी लेकिन जगह जो है ना वो इतनी समझ नहीं आती थी. I always loved Polo Lounge. And it was the mall of the खुले बाग लाहौर के अंदर, horses. वो वाला सिनारियो कहीं था नहीं. And then the second I came to know कि ये एक जगह बन रही है, I like अभी मुझे पता भी नहीं था कि पार्टनरशिप किससे करनी है, रेस्टोरेंट खोलना क्या है, उसमें खाना क्या होगा. आज लाइक साथ हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं. लाइक किसका? अपना खोल रहे हैं. अच्छा तुम सोच लो. मैंने कहा सोच लिया है, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, कल हम ये बात करें, ये हो रहा है.
कहता है लेकिन बाकी क्या करेंगे? मैंने कहा साहब वो कर लेंगे, तुम इन हो या आउट, बस ये बता दो मुझे। ऑफ कोर्स मैं इन हूं। तो मैंने कहा बस ठीक है, खत्म होगी बात, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ इट हैपेंड। Maram Aabroo, आप मुझे बताएं कि you guys are primarily like a makeup and photography, right? So what did you guys do in MaulaJatt, and you guys have also diversified your portfolio. So when did you decide, या वो भी organically हो रहा था, and you, और इन लोगों की तरह ही था कि यार हम लोग जो हमारी strengths हैं हम उस पे खेल के different projects को आगे लेके चलेंगे. You guys are doing movies and DOP and सारा कुछ कर रहे हो. We in terms of makeup तो हम लोग तो बहुत अरसे से like I did more like film projects, videos, सुहेल जावेद के साथ, शोएब साहब के साथ. So we were doing that, and बिली की वो video थी for Jal. And I remember 2007 में वो video थी, and that's when you know he was trying to make a mask of a monster, and बड़े हमने attempts किए थे, failed attempts, and then at that On time Saad. on Saad. He was in that video. सजनी जो मास्क पता नहीं कहाँ से बन के आया। आया था बना and that's when Billy said के I said you know I want to learn this, and he said मैं आपको कराऊंगा. And I mean क्या वो I think working on MaulaJatt, he did it for me, like knowing कि हमें कोई previous experience नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, but he gave us all the opportunities, products ला दिए, सब कुछ किया, and we learned everything on set. So that was one thing. Now I mean I can say That's impressive. I don't know what I find. I mean, I'm listening to these guys, and मुझे लग रहा है ऐसे they're literally speaking my mind and you know हमारा सारा process, because just like them, आपको at least with a friend आपको ये sense of security इतनी strong होती है कि मेरे दिमाग में कोई भी idea आएगा ना, the first person, day, night, whatever, I'll call her, message her के idea and this is it, and she'd be like, okay, what's next? Yeah, what's the next step? It's never के you know, it's never a big negotiation or like, you know, lots of convincing. Even in MaulaJatt hair wig के लिए we had children, new mothers, and I'm like Aabroo ऐसा करते हैं, मैं रुकती हूँ, तुम जाके wig making का course you करो. imagine? So she's a photographer, but she went to which studio? Yeah. Pinewood Studios, England गई, वहाँ पे wig making का course में. मैंने Leaving क्या my कर रही हूँ? 1 month That's so baby sweet. behind with her. हाँ. ये अपना बच्चा भी संभाल रही थी, मेरा भी 1 month old संभाल रही थी, and I am learning how to make That's wigs on her commitment. behalf. So that हम MaulaJatt पे काम. And she's like, and throughout the film, like I used to feel really sorry, and I was like, Aabroo, I'm so sorry. तुम्हें फिर फवाद की एक दाढ़ी लगानी पड़ेगी. I was like, I'm so sorry. But you know, on those days, I had to be on my, you know, good behavior with her. You know, be nice to her. Chai, coffee, music. के Aabroo upset now because you know, as a photographer, बेचारी क्या दाढ़ी. But imagine like she had made me learn applying दाढ़ी, hair by hair, और इतना इसने वो मुझे, यानी she gave me no choice. She said, no we choice. are doing this, You have but to I do can't it. handle everything. तो ये section तुमने संभालना है. Okay. Calls. ये करना है, कर नहीं, हम ये कर रहे हैं. आपको अच्छा ठीक है, कर लेंगे. But that shows the confidence in the other person. You And the friend, That's depend on your friend as Yeah. well. Okay. A woman That took is her the support into system. I mean, obviously she would, because aesthetically एक चीज को, एक दाढ़ी को groom करना, shape अच्छी लगना, whatever, it means something. It's not just you know, application. So मेरा भी अंदर से I would be nervous. अजीब वो 3 घंटों का process, ऊपर से an actor like Fawad and Hamza, it was nerve-wracking. इसको अलग stress, मुझे अलग stress. But in that time, I mean, I realized okay, things you do for a friend. And for business, and you're growing together. Yeah, absolutely. Honestly, it's not that. उस वक्त you cannot you know quantify कि हाँ इसकी value मिल रही है तो फिर मैं कर रही हूँ. No, it's pure stress. It is pure love. उसकी वजह से आप कर रहे हो तो एक दूसरे के लिए, वरना वो it's not, जो आपको मिल रहा होता है वो it's not at all close to what you think you know, कि नहीं करना मैंने. both of you are married. Yes. And you have kids. Yes. So शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, थोड़ा सा. First of all, we're not married to each other. Thank you for the clarification. Because I saw it in her face, she's like, और किस तरह word करते हैं? But it's sounding wrong.
और भी यही सिचुएशन लगे. No, separately. I got married before Maram. I got married in 2009. Maram got married in 2000. रैंडम प्रेशर मेरे आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, मैं क्या करूँ, आपकी शादी हो गई है, फिर मुझे भी करनी पड़ी. एक, one daughter. Yeah. Okay. So, But if you want something interesting, our kids, both our daughters are just 3 weeks apart. Oh. So that was amazing. Which was not planned. Everybody's like, seriously. If you know anything about me and Maram, we are not remotely, anyway. so आगे पीछे शादियां हुई हैं, बच्चे जो हैं वो 3 weeks के डिफरेंस से हैं, एंड यू गाइज इनटू अ प्रोफेशन व्हिच इज वेरी डिमांडिंग. How do you create that work-life balance? It was so amazing. We had each other's support. Yeah. Like मैं cranky हो रही हूँ, उसको गालियाँ दे रही है, मुझ पे निकाल रही है. When we had kids, MaulaJatt had started, and we were doing the whole taking care of the kids ourselves. मैंने काम जाना था, ये खुद feed ये करा रही थी, इसने करना होता था. I would be feeding the kids, so they're technically sisters as well. Yeah. So I think in a strange, cosmic way, Allah ने कुछ सोचा ही था, and we had kids together, and now we're very lucky and blessed that they have each other. Yeah. And every day our cycle works, because if I have work, they're together playing, and Over at my house, otherwise they're at her house. so एक comfort है. Work-life balance इस फील्ड में इतना possible honestly नहीं होता unless you put your foot down and you refuse work, because मजबूरी है, personal. And you have a personal Yeah. interaction with each client. तो वो यानी those hours you're there on set personally, you can't do this remotely unless of course you अगर आपका studio setup है तो because हम लोग अभी भी खुद काम कर रहे होते हैं तो फिर. And initially we had our kids in cots at MaulaJatt set. Yeah. And on Barna set, by the way. Yeah, Both films. we would yeah. travel wherever any Kids were The going. kids are Yeah. with you, and you are taking care of kids, whoever is there, and बस we managing would that. manage that. Yeah, that's amazing. आप लोगों के एंड पे कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें यू हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना है, बिकॉज जनरली द परसेप्शन अबाउट मैन इज के उनको तो ऐसी बातें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती. वैसे बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ I think ये थोड़ा सा बहुत सा वो वाला है कि perception about men. So we are not those men then. Yeah. Because I mean, of course, you care about the family and all that, but then the responsibility of a man running a house, everything changes as well. Yeah. So I mean, जिस capacity में कर सकते थे, we have done it and we are doing it. But I can't relate to this motherhood part because I am not a mother, but I just feel it's more difficult for a mother to do it. Yeah. Not for a man as such, because the responsibility of the child usually goes on a mother. So again, Yeah. डोंट थिंक इन दैट वे. मतलब ठीक है, एक बच्चे की जिम्मेदारी ऑब्वियसली इट इज़ मेजरली मदर, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द चाइल्ड, इट इज़ अबाउट दैट. एंड आई पर्सनली फील के men also think about their work life balance. It's just that सोसाइटी के अंदर उनको उस तरह से देखा ही नहीं जाता. मुझे बताओ कि how do you guys play on each other's strengths in business? Handling the contractor or the labor or the client or the project or the payments as well. if someone gets angry, तो मैं बात करता हूँ. हमने एक चीज कुछ आपस में काम करने के बाद ये चीज रियलाइज कर ली थी कि यार ये चीज मैं बेहतर हैंडल कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा, ये तू हैंडल कर सकता है, ये तू कर. इसमें मुझसे पूछ ले, लेकिन जिस तरह मैं कर रहा हूँ मुझे पहले करने दे, फिर पूछी. सो ये हमने बहुत देर पहले क्लैरिटी रख ली थी एंड वी स्टिल स्टक बाय इट. लाइक किसी को छुट्टी चाहिए वो साथ से लेगा, मुझे पैसे चाहिए वो मुझसे लेगा. सो बस ये हम दोनों को पता है, क्योंकि मैं लीनियंट हूँ छुट्टियों पे. कोई मांगे कहता है छुट्टी ले ले, ठीक है, साथ लीनियंट नहीं है. सो इसलिए हम दोनों ने ये चीजें रखी हुई है, गुड कॉप बैड कॉप वाला. बट ये दैट्स हाँ, वो बड़ा जरूरी है, गुड कॉप बैड कॉप. एग्जैक्टली. चले? How about you guys? हाँ. No. Bad call. अच्छा, हाँ यार, Really नहीं. But yeah, हालांकि people don't realize that, I'm the We real both- bad call. Actually, that's what I thought. ये कहना. no, but actually the decision दोनों का होता है ना. I mean, I don't just off a whim
make a decision. But वो मुझे आबरू से नहीं कहना, Maram please let's रात 12 बजे shoot है, please agree to it, and apparently कि हाँ Maram मान जाएंगे, whereas she's gonna ask me or say you think we should, but perhaps I am. I mean, I think once you have a long-term friendship and a business partnership, इतना एक दूसरे के ऊपर trust होना चाहिए. Like recently, we had to walk off the set, and it was totally like Ron said, सब कुछ है, and I said, Maram, I don't think so. And she's like, sure type, let's make it. But like I principally feel that jitni respect professionalism hum dikhate hain, the same should be reciprocated. Yeah, absolutely. And there is no harm, and which is why I feel terrible about today ke thoda late hue, but it's like some things that's perhaps the only thing you build in an industry, which is respect and your professional name. And you want to stick by that. So if in that partnership, if she can say to me, like she messaged me today saying, फलाने दिन उसका हम shoot कर रहे हैं, and I'm like, okay, this message definitely does not need a response from me saying how much is the payment, when is it, how many outfits, nothing. It just said it's okay, and I said okay. I think And in the same way, if I say, hey, I don't think we should be here right now, we should go, or this project isn't good for us, let's not do it, you're like, okay. And that's something that you only understand after years. And once you build that trust. Right. हाँ भाई मैं अपने पैर पे तो नहीं कुल्हाड़ा मारूंगी by refusing something wonderful or whatever. So if it's the same decision, you'll do it, and the other person says yeah. And we never, I'm sure with you guys are, दोबारा की भी बात नहीं करते मुड़ के कि हाँ होता ना गाड़ी में बैठ के यार वैसे अगर वो हम ले लेते प्रोजेक्ट बड़ा, never, because it's done. It's done, and with confidence कि ये वाकई wasn't good for us and you know best. In the same way, कर लिया अब इसने एक बुक शो, ठीक है, she knows best. Now I want to have answers about general perception about, like, we generally feel that लड़कों की दोस्ती लड़कियों की दोस्ती बड़ा डिफरेंस होता है उसके अंदर कि they hang out in a different way, girls hang out in a different way. But they do hang out in a different way. Yeah. How that's what we want to They've know. already told you. What exactly you feel that लड़कों की दोस्तियाँ कैसी होती हैं? And we will come to you and asking कि what do you think लड़कियों की दोस्ती? हम वो पूछे हमसे कि हमें I think मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आता. हाँ, जो कुछ I think girls are very much emotionally connected to each other. Like they in the core, like उसको दर्द होगी तो दूसरे को भी दर्द होगी. वो कौन सी they feel the pain. Boys don't feel the pain. मुझे दर्द नहीं लगता है. मतलब है लेकिन I think मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स इमोशनली कनेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं, which is a good and that's a good thing. If I can want to do a connection with a man or a friend, like कि यार मुझे दर्द हो रही है तो दूसरा बंदे ने ट्रिगर डालता है उसको फिक्स करना है. उसका ये नहीं होता कि मैं रोना शुरू कर दूं या तेरे साथ वो हो जाऊं. I just feel यही एक फर्क है. I think bond, what girls share, boys don't share that kind of a connection bond. I mean they can meet every day, सुबह दोपहर शाम. I think that कि वो मिल सकती हैं, उनका एक गर्ल गैंग होता है या वो एक यूनिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉयज. लेकिन बॉयज की जो दोस्ती है वो होती कैसे है? यार दोस्ती क्या कैसे होती है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का क्या क्राइटेरिया है? तो दोस्ती होती है. और नहीं, हमारी दोस्ती है कि हम बात, like you said, we're close. अगर उसको दर्द हुई है तो मुझे भी दर्द हुई है, right? And we talk about our emotions and our feelings and. I think इसमें मैं ये कहूँगा कि एक्सप्रेस करने का मेथड डिफरेंट है. Even जब अब इरफान को तकलीफ होगी तो ऑब्वियसली मुझे भी हो रही होगी. But I think the method of expression is very different. That's what I want to know. What is that method of expression? Because तो नहीं पता ना. verbally तो बोलते नहीं है एक दूसरे से. बोलते आप तो बोलना शुरू हो गए. By the thing, I think they become very different now. Like अभी सारे बोलते हैं यार, कौन नहीं बोलता. अब I think बहुत ज्यादा चीजें जो हैं बहुत ज्यादा different हो गई है. पहले वक्तों में maybe थोड़ी सी हमने कब नहीं बोला. ये तुम लोग की दोस्ती वैसे अजीब
अजीब सी लग रही है मुझे, बहुत गर्ली लगी है मुझे। What is girly? Why you stamping it like girly friendship? Girly friendship. I mean, what does that have to do with boys बड़ा की? strong, बड़ा tight है। नहीं, like लेकिन ये गर्ल और बॉय की दोस्ती वाला मुझे अभी तक सवाल ही समझ आया। मुझे भी I mean, you should be asking girls the same question कि तुम लोगों को as a girl क्यों लगता है कि हम कैसे गर्ल वाला जवाब दे? मुझे बिल्कुल भी whatever they're saying, like it's completely gender free वाली because जहाँ emotions आ जाते हैं ना वो they don't look at gender whatever and वही लड़कों को शायद articulate नहीं करना आता या शायद I don't know maybe बचपन में ना करते हो अब करते हैं। By the way, Maram and I हमारा reverse हो गया है। We used to talk so much. We don't. And now it's for years. We don't have to like बताएं ये हो गया. No, we will say of course what's going on, but that would be it. We don't really need to get into the nitty-gritties. Absolutely. Well, with age you change as well. Yeah, of course. Also सारी लड़कियों की friendships एक जैसी नहीं होती. जिस तरह वो कह रहे हैं, I think हमारा भी वही है. If I tell her this is going on, this is a masla in my life right now, वो भी सबसे पहले यही solution. सबसे पहले let's do this ताकि let me take your pain away. और इसका ये हम practical steps लेते हैं. In the same way I would do that, but that's about it. सबसे पहले थप्पड़ वैसे personally मुझ पे ही आते हैं. खा चुकी हूँ वैसे थप्पड़. कोई भी प्रॉब्लम पे थप्पड़ नहीं खाया. This is you trying to help. But I don't think it's like that. It's friendship is. Yeah, it's. इसमें वो बावली की लड़के की. I have no idea लड़के I think we do the same stuff, right? Yeah, exactly. We listen to music, watch movies, in all the time that we were growing up. काम करते हैं तो बस you're just हर दिन आप इकट्ठे हैं, you're breaking bread together, you're using the loo together, like everything is like just life. And it's just routine and it's wonderful. और उसमें बल्कि another person when they enter the room they feel like whoa, there's a lot of synchronicity happening here जिसमें वो कई दफा नहीं enter हो पाते and they feel like outsiders, whereas we're just like okay, it's so natural. Yeah, it's always been like this. जैसा आबरू बोल रही है कि हम लोग को जरूरी नहीं है कि बात करें. अब तो आई थिंक मैं और इरफान भी जैसा पहले एक टाइम पे बात करते थे अब नहीं करते, बट अगेन दैट कनेक्शन इज स्टिल देयर. सो आई थिंक वो चीज को मैं डिफाइन नहीं कर सकता. आई कांट डिफाइन इट. वक्त के साथ सारी चीजें चेंज हुई. चलो, to round it off, to close this, what does this friendship mean to you and to you and to you and to you? Let's just round this off. Mean to you. What does this friendship heart to heart? आपको पूरा 1.5 घंटा हमने एक्सप्रेस कर दिया. अच्छा, आप हमें एक जवाब दें कि आपने सुनी पूरे इंटरव्यू के बाद जो सीखा है वो आप कहें कि ये दोस्ती आपको कैसी लगती है, ये दोस्ती आपको कैसी लगती है. Actually, we don't need to give the answer. You need to give the answer. अच्छा, I can give that answer. This is the better thing happening right now. तो यार आप इधर आए ना. मैं honestly I knew that you guys were really, really good friends, but I am really pleasantly surprised at this friendship. And I didn't think कि boys की इतनी close bonding होती है. नहीं, boys की बड़ी close bonding होती है. वो भी boy बैठा है पीछे, even though वो boy नहीं रहा, लेकिन ऐसी होती है boys यार. होते हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होते. इतने होते नहीं है, लेकिन you guys are expressive and you guys talk about things and you guys, I'm surprised at how much you guys know about each other. But then they've been together for so many years. यार हम 28 साल से इकट्ठे हैं यार. मतलब दिन के बहुत घंटे हम इकट्ठे गुजारते हैं. हम भूल भी गए. So thank you so much for taking the time out. I know you guys are all really, really busy. We're on a very tight schedule right now, so I'm just going to quickly wrap this up and say thank you so much, Saad. Thank you, Ifran. Thank you, Aabroo. Thank you, Maram. It was really nice. I hope you guys enjoyed yes, fun. Yes, seeing you. It's a different. Yes, it's a very different conversation. I don't think कभी किसी ने आप लोगों को इस तरह बुलाया और to discuss your friendship and ऐसी बातें करने के लिए मैं बड़ी दिनों बाद की. Thank you so much. Thank you.